Okay, so hi everyone. So we are going to start a new chapter that is respiration in organisms. So this is our lecture number 1. So इस chapter में हम basically देखेंगे कि how do organism respirate, how they breathe, क्या process होता है respiration का and कितने type की respiration होती है, right? So ये chapter मैं presentation की form में cover करूँगी. I hope you will note down all the points. Okay, so let me start with my first presentation. All right. So here we go with our first presentation, first slide. So each cell of an organism performs functions like nutrition, transportation, excretion, and reproduction in its purpose. So it needs energy. So our food is stored in energy which is released during respiration. Breathing is the process during which we breathe in air having oxygen and we breathe out air carbon dioxide. So the air rich in oxygen is transported to all the part of the body and ultimately to each cell. So the oxygen utilized by the respiration, so the process of breakdown of food in cell of an organism which is released its energy, so it is called cellular respiration. Now see, हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, we are knowing that जो सेल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेट कर रहे हैं. हाउ दे आर रेस्पिरेटिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर टेकिंग द एयर, किसकी फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, और वो क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है. नाउ सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, और वो एनर्जी कौन ले रहा है, हमारे सेल्स ले रहे हैं, राइट. सो व्हेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड in the cell to take the energy, उसे हम क्या बोल रहे हैं, cellular respiration, right. So now the type of respiration, so on the basis of presence of or absence of oxygen, respiration is classified into two types. First is aerobic respiration. Now see, we are now talking about टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप की है. सो पहले दो टाइप की होती है, एरोबिक एंड एनएरोबिक. सो पहले हम एरोबिक की बात करेंगे. सो व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. So during the aerobic respiration, oxygen is completely broken down into carbon dioxide and water and energies which is released in aerobic respiration. So take place in mitochondria. याद रखना कि जो हमारा aerobic respiration होता है वो क्या होता है, वो respiration जो किसकी presence में हो रही है, ऑक्सीजन की presence में हो रही है, right. So the respiration which is taking in the presence of oxygen is called aerobic respiration. जो कहाँ पे होती है, सेल के कौन से पार्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में होती है. सो सेल हैव नंबर ऑफ ऑर्गेनील्स इनसाइड, उसमें से एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पावर हाउस. व्हाई वी आर कॉलिंग इट पावर हाउस, देखो जो फूड होता है वो क्या हुआ, जो ग्लूकोज होती है वो क्या हुआ, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, फिर किसकी फॉर्म में आया, वो एनर्जी की फॉर्म में आया, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी मिल रहा है. सो एनर्जी कहाँ पे आ रही, माइटोकॉन्ड्रिया में आ रही है. सो पावर हाउस हो गया वो सेल का, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए पावर, उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टोरिंग द एनर्जी, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ द ग्लूकोज विच इज द फूड is break down in carbon dioxide, water and energy. So देखो in किसकी बात कर रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें. व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट. So aerobic respiration is seen in most of the organisms such as humans, dog, cat, lion, elephant, cow, buffalo.
earthworm, fishes, etc. So we, the organisms like animal, we human beings, what we do, we respirate. And how do we respirate? We respirate in the presence of oxygen. Okay, so we need the oxygen, we take the oxygen inside our body. So because of that oxygen क्या होता है, जो फूड होता है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी फॉर्म में, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड देन. Here we go with the anaerobic respiration. So anaerobic respiration क्या होता है? When a breakdown of glucose take place without using the oxygen. ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है. It is called anaerobic respiration. So जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है in the absence of oxygen, which means no oxygen is present, उसे हम क्या बोल रहे हैं, anaerobic respiration. So the glucose is not completely break down into carbon dioxide and water. So an intermediate compound is formed which is release of less amount of energy during the process. So it can be shown कि ग्लूकोज है, हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है किसकी फॉर्म में, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो दोनों रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक? एरोबिक में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता. सो जो हमारा ग्लूकोज है दैट इज ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रोडक्ट याद रखना कि जो एनारोबिक है उसमें एल्कोहल बन रहा था और उसमें हमारा एरोबिक में क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, राइट. सो ईस्ट सच एज Saccharomyces cerevisiae and certain bacteria carried out anaerobic respiration. So Saccharomyces cerevisiae क्या होता है, एक ईस्ट होता है. ओके वो क्या करता है, वो anaerobic respiration करता है, which means it respirate in the absence of oxygen. So these organisms that carried out respiration in the absence of oxygen called anaerobes. So anaerobes क्या होता है, याद रखना anaerobes वो organisms होते हैं जो respirate करते हैं in the absence of oxygen, which do anaerobic respiration, right? Next we have yeast. So yeast is a single cell organism during an aerobic respiration which is called fermentation. Yeast produced alcohol, ethanol such as byproduct which is used in making the wine and beer. So carbon dioxide produced by yeast is used in bread making industry. CO2 gas released during the process called the bread dough to rise. Okay, now see, आपने देखा होगा कि अगर आप केक को बेक करते हो सो वो क्या होता है, फ्लफी हो जाता है, वो थोड़ा ऊपर आ जाता है और उसमें छेद हो जाते हैं. ऐसे जो ब्रेड होता है उसमें वो छेद हो जाते हैं, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू यू सी द holes in the bread? You will write because of the release of carbon dioxide. क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी सो वो बबल की फॉर्म में बाहर आएगी. सो दैट इज व्हाई वी सी द होल्स इन द ब्रेड. नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट जो एल्कोहल, जो वाइन और बियर कैसे बनती है. सो क्या होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है और जो हमारा एल्कोहल और इथेनॉल रिलीज होता है वो किस में हेल्प कर रहा है, वाइन और बियर बनाने में, राइट. सो एनाएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, आई होप दिस इज क्लियर. दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक. सो आप जितने भी पॉइंट्स हैं ये प्लीज नोट डाउन कर लो एंड रिवाइज इट. नेक्स्ट वी हैव अबाउट द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. सो यूजुअली aerobic respiration take place in humans, but under certain condition anaerobic respiration may also occur in our muscles, so for a short time. So during the temporary deficiency of oxygen, when we perform a heavy exercise like running, cycling, walking, weightlifting, etc., we require a large amount of energy. So to meet the energy required, our muscle cell perform
anaerobic respiration. So during this process, the oxygen or the food in the muscle cell is partially broken down in the absence of oxygen to form lactic acid, and some extra energy is released. So the following equation for shows the production of lactic acid. Now remember, हमें पता है कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, विच मीन्स दैट वी नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. बट कुछ कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. जैसे अगर हम मैं आपको बोलूँ कि चलो जल्दी तेज तेज भागो, आप भागोगे, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आपके लेग्स में पेन होने लग जाएगा. why that pain we feel in muscle? बिकॉज क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जो हमारी मसल्स होती है ना, जो मसल सेल्स होते हैं, वो क्या शो करता है, anaerobic respiration. मतलब in the absence of oxygen it produces the energy. So क्या होगा, जो हमारे मसल सेल्स में फूड होगा वो क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी रिलीज करेगा. याद रखना, अगर हम कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं उसमें एनर्जी की चाहिए होती है हमें जरूरत. सो व्हाट हैपन, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. सो व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज वी आर फीलिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट. याद रखना, क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा कि वाई डू वी फील पेन इन आवर मसल्स. सो आप लिखोगे, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इफ समवन इज रनिंग एंड ही और शी माइट फील पेन, उसे पेन फील हो रहा है अपने पैर में. सो आप लिखोगे the pain is because of production of lactic acid. Why? Because in the muscle cells there is lack of oxygen. So because of the lack of oxygen, anaerobic respiration will happen. So the glucose will convert it into lactic acid, right? So this occur because during the vigorous physical activity, the utilization of oxygen at the fastest rate in our muscles, it can be supplied by the body. So when the lactic acid produced during the anaerobic respiration, it gets accumulated into the muscles. It causes muscle cramp. So the muscle cramp can be revealed to take a hot water bath or massage. So this improves the circulation, blood and oxygen supply to the muscles as it increases. So the increased supply of oxygen result in complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. Okay, so it gives us relief from the cramp. Now see, मैंने ये चीज सेम चीज बताई कि आपको पेन क्यों फील होता है, बिकॉज आपकी जो मसल सेल होते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इज हैपनिंग, दैट मसल विल द फूड विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, उसकी वजह से हमें पेन फील होगा. अब क्वेश्चन आ सकता है कि इस पेन से आपको कैसे आराम मिले, कैसे रिलीफ मिले. सो यू विल राइट कि हॉट वाटर बाथ हम देते ना, गर्म पानी की सिकाई कर लो, और वी गिव मसाज ऑन द फुट. सो बिकॉज ऑफ दैट मसाज एंड हॉट वाटर व्हाट हैपन, उस पार्ट में, उस मसल सेल में ब्लड सर्कुलेट तेज तेज होने लगता है. सो बिकॉज ऑफ दैट लैक्टिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, right? I hope this is clear. So because of that we feel the relief in our muscle pain, right? Okay. Next we have the difference between these two. So here we have aerobic respiration and here we have anaerobic. So aerobic respiration, it occurs in the presence of oxygen. ये हमें पता है. It take place in the absence of oxygen, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता. एरोबिक में क्या हो, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू एरोबिक रेस्पिरेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा. थोड़ा यहाँ पे एनारोबिक में क्या होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन. नाउ एरोबिक में क्या होगा, जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होंगे, CO2 एंड वाटर. देखो हमने देखा था ना, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. बट यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट होंगे, या तो वो एल्कोहल होगा या फिर वो क्या होगा, CO2 या फिर लैक्टिक एसिड. याद रखना, लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी मसल्स में. क्वेश्चन ऐसे ही आता है. एरोबिक में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन. बट एनारोबिक में क्या होता है, ओनली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड
नाउ एरोबिक में क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, बट एनएरोबिक में क्या होता है, एनर्जी कम रिलीज होगी. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये डिफरेंसेस बहुत आते हैं, सो ये डिफरेंस ये टेबल बना लेना. नाउ वी हैव ब्रीथिंग. So what is breathing? It is the process in which air rich in oxygen is taken inside and air rich in CO2 is given out with the help of respiratory organ. So breathing involves two functions, two steps: inhalation, which is taken in the rich in oxygen air; exhalation, giving out air rich in CO2 from body to external environment. So this activity must be performed under the supervision. Okay, now this is an activity. So breathing, what is breathing? Breathing ऐसा process है, जिस process से हम air ले रहे हैं और air बाहर निकाल रहे हैं. So हम air कौन सी air लेते हैं? We take oxygen inside our body, right? This is clear. And we exhale carbon dioxide. So inhale क्या है? We taking the air inside, and exhalation we are releasing the carbon dioxide from the body. So there is an activity कि आप ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हो. सो अपनी एयर को आप जब अंदर लोगे, सो क्या होगा, यू कैन फील दैट इनहेल हो रही है आपकी एयर, एंड व्हेन यू विल एक्सहेल द एयर, सो इट मीन्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी. So this was an activity, this was breathing. So I hope breathing is clear to you. Then we have breathing rate. Okay. So breathing rate, the number of time a person breathe in a minute term as breathing rate. So an adult being inhale like 15-18 times in a minute. So it is average breathing of an adult being. So the breathing rate of person is not always constant. It changes according to the oxygen requirement of the body. Breathing rate is somewhat faster in women than in men and children. It is higher 20 to 30 times per minute than adult. So breathing rate is slowest while sleeping, as less energy is required, while maximum during heavy exercise like running. So much energy is required. Increasing the breath rate provide a great amount of air entry into the lungs, and blood can absorb the oxygen at faster rate. The faster breathing supplies more oxygen to the blood cell, be producing more energy required in a heavy exercise. So during heavy exercise, the breathing rate can increase to 25 per minute. Because of this, food get broken down into a faster rate, and you feel hungry. So when we feel sleepy or tired, we yawn. So open our mouth wide to take a deep breath, because of breathing rate slows down and the body does not receive sufficient oxygen. Okay. So what happen is कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है, व्हाट इज ब्रीथिंग रेट? ब्रीथिंग रेट होता है कि एक इंसान एक मिनट में कितनी बार इनहेल और एक्सहेल करता है, राइट? सो इट इज अबाउट 15 to 80 टाइम्स इन अ मिनट. अब क्या होता है कि जो ब्रीथिंग रेट होता है वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पर. अगर आप सो रहे होते हो तो आपका क्या होगा, आपकी जो ऑक्सीजन, आपका जो इनहेल और एक्सहेल होगा, ब्रीथिंग रेट वो स्लो होगा. व्हाई इट इज स्लो? इट इज स्लो बिकॉज आपकी बॉडी को कम एनर्जी चाहिए होती है, राइट? अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप भाग रहे हो, रन कर रहे हो, सो व्हाट हैपन, योर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होगा, आपकी बॉडी में यू नीड मोर ऑक्सीजन, और आपका जो ब्रीथिंग रेट होगा, आपकी जो इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस होगा वो बहुत तेज हो जाएगा, लाइक 25 टाइम्स मोर हायर देन अ नॉर्मल पर्सन. ओके, सो अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, लाइक व्हाई यू फील यॉन एंड टायर्ड? आपकी बॉडी बहुत टायर्ड फील इसलिए करती है क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. यू मे फील मोर हंग्री, यू नीड मोर फूड, सो दैट इज व्हाई यू फील lazy. Okay, so I hope the breathing rate, anaerobic, aerobic respiration term is clear. So we are going to continue this in our next lecture, right? So I hope this is clear to you. So thank you so much.